Hello and welcome back to Ganga Education. On this platform, you will find quality lectures relating to the field of law, competitive examination in legal domain, important legal facts and legal history, all explained in clear and structured manner. Welcome to Ganga Education, Section 18, Transfer in Perpetuity for Benefit of Public. आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जुडिशरी एस्पायरेंट्स और एलएलबी स्टूडेंट्स अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एक हाईली स्कोरिंग और एब्सोल्युटली क्रूशियल सेक्शन है। तो चलिए अपने नोट्स निकाल लीजिए क्योंकि हम इसको एकदम सिंपल एग्जाम रेडी फॉर्मेट में ब्रेक डाउन करेंगे। लेट्स गेट राइट इनटू इट। Okay, let's look at today's roadmap. हम cover करेंगे definition and scope, the Bare Act provision, exceptions to perpetuity, public benefit essentials और आखिर में एक quick revision summary ताकि सब कुछ naturally याद हो जाए। Section 1, Definition and Scope, Understanding Section 18। आपके सामने एग्जैक्ट सोर्स मटेरियल का एक्सर्प्ट है। ये वही स्टैंडर्ड सिलेबस है जो एलएलबी और जुडिशरी एग्जाम्स में डायरेक्टली आता है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा पूरा एनालिसिस 100% इन्हीं लीगल मटेरियल्स पर बेस्ड है। जो भी हम यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे दैट्स परफेक्टली अलाइंड विद व्हाट द एग्जामिनर वांट्स। तो सेक्शन 18 एक्चुअली कहता क्या है? सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये सेक्शन बात करता है ट्रांसफर इन परपेचुइटी की। परपेचुइटी का मतलब है हमेशा के लिए, फॉरएवर। अब जनरली लॉ को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि प्रॉपर्टी हमेशा के लिए टाइड अप रहे, एक ही परिवार में लॉक्ड रहे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब ट्रांसफर का मेन पर्पस बेनिफिट ऑफ द पब्लिक हो, यानी आम जनता की भलाई, तब सेक्शन 18 पिक्चर में आता है। और ऐसे केस में ये परमानेंट ट्रांसफर कंप्लीटली वैलिड माना जाता है। अब इसके स्कोप को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला पॉइंट तो एकदम क्लियर है, राइट? प्रोविजंस फॉर ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर पब्लिक बेनिफिट। लेकिन एग्जाम्स में एग्जामिनर्स थोड़ा ट्रिकी सवाल पूछते हैं। सेक्शन 18 में कुछ और भी शामिल है। इट ऑल्सो कवर्स पेमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ द ट्रांसफरर, मतलब जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसके कर्जे चुकाना। और इसके अलावा पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ एनी अदर पर्सन टेकिंग एन इंटरेस्ट अंडर द ट्रांसफर। अक्सर स्टूडेंट्स ये डेट्स वाला पॉइंट अपनी रीडिंग में मिस कर देते हैं, पर एमसीक्यूज के लिए ये डिटेल लिटरली अ गेम चेंजर है। Section 2, the Bare Act provision, Reading the law. Now, what's really interesting here is the exact wording. Bare Act specifically कहता है, the restrictions in sections 14, 16 and 17 shall not apply in the case of a transfer of property for the benefit of the public in the advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety or any other object beneficial to mankind. इसको बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पब्लिक बेनिफिट के सामने जनरल प्रॉपर्टी रिस्ट्रिक्शंस बेंड हो जाती हैं। जो रुकावटें बाकी सेक्शंस लगाते हैं वो यहाँ अप्लाई ही नहीं होंगी। Section 3, Exceptions to Perpetuity, the legal context. सो यहाँ ये कंपैरिजन समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। एक तरफ हमारा जनरल रूल है जहाँ प्रॉपर्टी लॉ स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है अंडर सेक्शंस 14, 16 और 17। लॉ इनहेरेंटली नहीं चाहता कि प्राइवेट हाथों में प्रॉपर्टी हमेशा के लिए लॉक्ड रहे। डेड हैंड कंट्रोल अवॉइड करना चाहता है लॉ। पर दूसरी तरफ वी हैव द एक्सेप्शन। अगर ट्रांसफर पब्लिक बेनिफिट के लिए हो रहा है तो रिस्ट्रिक्शंस डू नॉट अप्लाई अंडर सेक्शन 18। ये स्पेशल छूट लॉ ने इसलिए दी है क्योंकि जब प्रॉपर्टी पब्लिक चैरिटी या वेलफेयर के लिए यूज होती है तो वो ऑटोमेटिकली पूरी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है। Section 4, Essentials of Public Benefit, the core ingredients. This is the most exam-oriented part of our explainer. Law directly इन 6 specific categories को list करता है। Advancement of religion, knowledge, commerce, health, safety और आखिरी umbrella point, any other object beneficial to mankind. मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप इन एग्जैक्ट 6 नंबर्ड पॉइंट्स को अभी मेमोराइज कर लें। ये कोर इंग्रेडिएंट्स हैं जो प्रूफ करते हैं कि बेनिफिट एक्चुअली पब्लिक नेचर का है। चलिए इन एसेंशियल्स को डे टू डे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला और दूसरा पॉइंट था एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन एंड नॉलेज। मान लीजिए आपने अपनी एक प्रॉपर्टी हमेशा के लिए डेडिकेट कर दी जहां एक पब्लिक टेम्पल बनेगा, या फिर आपने एक फ्री पब्लिक यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए जमीन ट्रांसफर की। ये क्लियरली सोसाइटी की नॉलेज और रिलीजन को एडवांस करता है, इसलिए ये एक परफेक्टली वैलिड पब्लिक बेनिफिट है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स एज वेल, एडवांसमेंट ऑफ कॉमर्स एंड हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन किसी गांव के पब्लिक मार्केट प्लेस के लिए परमानेंटली ट्रांसफर करता है तो वो क्लियरली कॉमर्स को बढ़ावा दे रहा है। उसी तरह अगर प्रॉपर्टी एक चैरिटेबल हॉस्पिटल या फ्री पब्लिक क्लिनिक बनाने के लिए दी जाती है जिससे आम जनता की हेल्थ इंप्रूव हो तो वो हेल्थ एडवांसमेंट में आएगा। बोथ कंडीशंस परफेक्टली सैटिस्फाई सेक्शन 18। आखिर में हम बात करते हैं एडवांसमेंट ऑफ सेफ्टी और एनी अदर ऑब्जेक्ट बेनिफिशियल टू मैनकाइंड। सेफ्टी का मतलब है फॉर इंस्टेंस किसी डिजास्टर प्रोन एरिया में
पब्लिक डैम या फायर सेफ्टी शेल्टर बनाने के लिए ज़मीन देना। और जो आखिरी पॉइंट है ना, मैनकाइंड की भलाई वाला, वो एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है। लॉ ने इसको जानबूझकर इतना फ्लेक्सिबल रखा है ताकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनिमल सेंचुरीज या आगे चलकर क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स जैसे नए वेलफेयर ऑब्जेक्ट्स भी इसमें आराम से कवर हो जाए। Section 5. Quick Revision Summary. Exam Ready. लेट्स ब्रिंग इट ऑल टुगेदर नाउ। ऐसे ही चार्ट आपको एग्जाम में फ्लैश होना चाहिए। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 18 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। मेन रूल क्या है? ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर पब्लिक बेनिफिट। ये किस रूल का एक्सेप्शन है? सेक्शंस 14, 16 एंड 17 का। और इसके 6 मेन एसेंशियल्स क्या हैं? रिलीजन, नॉलेज, कॉमर्स, हेल्थ, सेफ्टी और मैनकाइंड की जनरल भलाई। एग्जाम्स के लिए क्लियरली याद रखिएगा, जब भी पब्लिक बेनिफिट की बात आती है आपको इन्हीं कोर स्टैट्यूटरी कीवर्ड्स पर पूरा फोकस करना है। तो दोस्तों, ये था हमारा इन डेप्थ एक्सप्लेनर ऑफ सेक्शन 18। जाते जाते एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल अपने दिमाग में सोचिएगा। प्रॉपर्टी लॉ प्रैक्टिकली हमेशा प्राइवेट वेल्थ और एक्सक्लूसिव राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, पर पब्लिक गुड के सामने इन स्ट्रिक्ट प्राइवेट रूल्स को कैसे एकदम से बेंड होना पड़ता है, यही सेक्शन 18 का सबसे पावरफुल असर है। इस डेलिकेट बैलेंस के बारे में आपका क्या सोचना है? For more such law lectures, subscribe to Ganga Education. Welcome to Ganga Education. Today, we are going to crack a really important problem-based question on the Transfer of Property Act. This specific question is absolutely crucial for both your LLB exams and your judiciary papers. When you get these kind of tricky property transfer scenarios in your exam, you need to know exactly how to present your legal reasoning. So grab your notebooks and let's get into it. Here's our roadmap for today. We'll start with the legal problem, move to the core issues and TPA sections, cover the rule and its exception, go through a step-by-step application, look at the final verdict, and wrap up with some essential exam tips and revision. Okay, Section 1, the legal problem, analyzing the facts. Now, listen closely to this problem. Mr. A transfers his ancestral land forever, specifically for a public library and a free health clinic. After his death, his legal heirs challenge this transfer in court under Section 14 of the Transfer of Property Act, claiming it creates a perpetuity and is therefore void. So, the court has to decide, is this transfer actually valid? Let's break this down into simple terms. The situation is that Mr. A gave his ancestral land to trustees with a very strong condition. He said the income from this property must be used forever to run a public library and a free health clinic. Naturally, after he passes away, his legal heirs want that property back, right? So they argue that this forever transfer is completely void according to Section 14. Moving on to Section 2, Core Issues and TPA Sections, Identifying the Legal Conflict. In your exams, you need to know how to frame these issues precisely. Our main legal issue here is a permanent transfer for a public library and health clinic hit by the rule against perpetuity? And our secondary issue is, does this specific transfer fall under the public benefit exemption in the law? The first, absolutely vital piece of law here is Section 14 of the Transfer of Property Act 1882. Section 14 talks about the rule against perpetuity. The general rule is that the law really doesn't like dead hand control. You can't just tie up your property forever after you die. A transfer taking effect after the lifetime of living persons at the date of transfer is generally considered void, and the legal heirs are trying to use this exact rule to get the land back. But here comes the hero of our problem, Section 18. This section explicitly states that the strict restrictions in Sections 14, 16, and 17 just do not apply if a transfer is made for the benefit of the public. This exemption acts as a massive shield for properties that are dedicated to the welfare of society. That brings us to Section 3, the rule and the exception, understanding the core principles. So the entire legal battle here is super clear. On one side, we have Section 14, which normally declares any forever transfer completely void. On the flip side, we have Section 18, which acts as a powerful exception, making forever transfers valid as long as they are for public benefit. Whenever this question pops up in an exam, the contrast between these two sections needs to be crystal clear in your answer. You absolutely must use this Latin maxim in your answers, salus populi suprema lex. If you write this down, the examiner instantly knows you understand the core philosophy behind the law. It simply means public welfare is the highest law. Sure, private inheritance is important, but the health and knowledge of society as a whole, that is a much bigger priority.
Section 4, Step-by-Step Application. Let's apply the law to our facts. Let's build our systematic reasoning piece by piece. Step 1, Mr. A's intention was clearly a forever transfer of perpetuity. Step 2, under normal circumstances, Section 14 would instantly make this void. Step 3, we apply the scrutiny of Section 18. Step 4 is the real game changer here, because Section 18 mentions specific categories. Our library perfectly fits into the knowledge category and the free clinic fits into health. And finally, Step 5, because the Bear Act explicitly protects these, social utility is going to completely override the general restriction. Now, to make your answer truly unbeatable, you need to drop in a landmark English judgment. Make sure you note this case down. Trustees of the British Museum versus White. In this landmark case, the court established that a gift for the benefit of a public library is a completely valid charitable gift. This legal authority directly validates the library fact in our problem. And since we are preparing for Indian exams, do not forget to add the Indian context. You should mention that in Indian jurisprudence, waqfs and Hindu religious endowments are also protected from the rule against perpetuity. Why? Because they serve a mass public or religious purpose, which perfectly aligns with the whole spirit of Section 18. Section 5, Final Verdict and Real Examples, concluding the case. So, what's our final legal conclusion? The transfer made by Mr. A is completely legally valid and binding. The legal heir's claim to get the property back is going to entirely fail. Section 18 of the Transfer of Property Act steps in to save public knowledge and health from the general restrictions against tying up property. If we connect the law to practical everyday life, you'll see real examples of this all the time. Think about a philanthropic family donating a plot of land for a free village clinic, or a massive library endowment. These properties continue to serve society generation after generation without being voided by Section 14. The law always wants to promote public charity. Finally, Section 6, Exam Tips and Revision. Let's maximize your marks. Let's do a rapid-fire quick revision. If you are taking notes, definitely mind map these points. The main section is Section 18. Its definition basically says that for public benefit, perpetuity is entirely allowed. The essentials are key here: religion, knowledge, commerce, health, and safety. And of course, the most powerful legal doctrine, the maxim salus populus suprema lex. Keep these pro tips in mind for your judiciary and viva preparation. Always, always write the exact section numbers in your exam. That's 114 and 18. Highlight that Latin maxim and cite the trustees of the British Museum case as your legal authority. Mentioning waqfs and Hindu endowments shows the examiner you have a holistic understanding of the law. And seriously, just underline Bear Act keywords like knowledge and health. So today, we've easily mastered a really tricky, highly important concept in property law. With this step-by-step problem-solving approach, you can clearly answer literally any complex legal issue. The next time you see a century-old hospital or a public library, ask yourself, is it a Section 18 exemption that's keeping its doors open for the public today? It really makes you think. For more such law lectures and problem-solving sessions, subscribe to Ganga Education. Keep studying, stay curious, and best of luck with your exams. Thank you for watching this session. If you found this lecture useful, do like, share and subscribe to Ganga Education. Keep learning, keep growing and stay connected for more law lectures.